Good morning, students. Hope you understand the various types of conflict. Now, the four type of conflict we are talking about, that is interpersonal conflict that occur between two individual in an organization. Basically, जब दो जनों के बीच में conflict arise हो रहा है, then it has become a interpersonal conflict. It arises mainly because of differences in a perception, your temperament, your personalities, your value system, social culture factors, and the role ambiguity. Okay, and in a group behavior, when we discuss transaction analysis, Johari window, stroking, life position, these are the techniques which help us to reduce or to understand the interpersonal conflict. The phenomena of interpersonal conflict can be easily understood by transaction analysis, by which ego state you are talking, and Johari window, which tell you whether this part is or not, you are open or not, whether you are getting any response from the opposite party, stroking, life positioning. All this will help you to understand why the interpersonal conflict arises, so you can find out the solution to solve that particular conflict. Here, a conflict interpreted in two forms: a vertical conflict and horizontal conflict. A vertical conflict is between the superior and subordinate relationship. Superior attempt to control the behavior of a subordinate, and subordinate will resist. Then it is a vertical conflict. And horizontal, within your peer group, among the person at the same level. These interactions may be cooperative, conflicting, depending on the nature of the person and situational variable. Then there is an intra-group conflict. Intergroup conflict. The intergroup conflict refers to the dispute one, among some or all of the group members, which often affect the group performance. जब आपके ग्रुप के अंदर ही लड़ाई हो रही है, then it has become a intragroup conflict, which adversely affect the group performance. Like family run business can be especially prone to severe intergroup or other type of conflict, like late Dhirubhai Ambani, two sons fight for the ownership. Okay, and disagreement may be over the ethics, the way power should be exercised, or or a moral consideration, assumptions, justice, fairness, any kind, anything can be the reason for the intergroup conflict. They can intergroup conflict take place among them as they argue to the pros and cons of taking such a risk. आपके पास कोई नया असाइनमेंट आ रहा है, कोई रिस्क, कोई टास्क है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेके भी हो सकता है कि इंटर ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो कि वेदर यू वांट सम मेंबर्स वांट टू गो फॉर इट, सम मेंबर्स डोंट वांट टू गो फॉर इट. Okay, then the intergroup conflict will arises. Then another form of conflict is the intergroup conflict. Is also called organizational conflict. It refers to a conflict between a group, department, section in an organization. A conflict between group is frequent and highly visible. अगर दो ग्रुप के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर हो रहा है, तो then it can be highly visible conflict, which is commonly find out the intergroup conflict. There are a number of reasons, like task interdependency. It refers to an extent to which departments depend on each other for assistance, information, compliances, or other coordinative act in the performance of their respective tasks. जब इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी. मीन्स टीम काम कर रही है, मगर टीम टू का काम तब तक नहीं होगा जब तक टीम वन काम करके नहीं देगी. तो इंटरडिपेंडेंसी है, और जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज अवर वर्क विल हिंडर बिकॉज ऑफ दैट. ओके, सी दिस, like pooled interdependency.
टास्क आपको परफॉर्म करना है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, जब ये तीनों करेंगे तब जाके आपका टास्क पूरा परफॉर्म होगा। ठीक है। देन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरडिपेंडेंसी, सब एक दूसरे पे डिपेंड है काम के लिए। देन सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंसी, जब टीम 1 का काम होगा तब टीम 2 का होगा, देन आफ्टर टीम 3। देन आपका रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंसी, टीम 1 और टीम 2 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, देन टीम 3 टीम 4 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मीन्स अगर ये टास्क इंटरडिपेंडेंसी होगी तो क्या होगा कि आप लोगों में कंफ्यूजन, आपके में जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होंगे, क्योंकि आपका काम दूसरी टीम की वजह से हैम्पर हो रहा है। सपोज आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपकी क्लास में मैंने जो है, अगर 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स में 3 का एक ग्रुप और 2 का एक ग्रुप बना दिया कि भाई डेटा कलेक्शन का काम ये 2 बच्चे करेंगे और 3 बच्चे जो है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का काम करेंगे। अब 3 बच्चे रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का जो काम कर रहे हैं, उनका काम तब तक नहीं होगा जब तक कि डेटा कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो दोनों के बीच में टाइम अगर कम है तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। रिसोर्सेज अगर उनको शेयर करने पड़ रहे हैं तो उनके भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कि भाई मैम उन 2 बच्चों ने नहीं किया इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंसी विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। देन टास्क एम्बिग्यूटी, when it is not clear which group is responsible for performing certain activity, things fall between the crack. Both groups are upset with each other. And task ambiguity can also occur when unstructured, non-destructive leadership was there. ज़्यादातर जो आप लोग मैरिजेस में देख रहे हैं होता है कि टास्क अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग काम के लिए, बट कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो क्लियर ही नहीं है कि भाई मेरा काम ये इस ग्रुप का काम था या उस ग्रुप का काम था। दे फॉल इनटू द क्रैक एंड इट मेक अपसेट टू एवरीवन। क्लियर। एंड अगर लीडरशिप अच्छी है, इट इज़ वेरी गुड लीडरशिप, very clear leadership, each and every aspect is very clear कि which group have to perform which task and how their performance will going to evaluate, then this task ambiguity can be resolved. Then goal incompatibility, manager try to avoid incompatible goal for different organization unit. If one group is incompatible with one task, so they generally avoid that for another group. That create a conflict. When competition for a limited resources is there, if you have a limited resources, everyone have to finish their task on time, then conflict will arise. Competitive reward system is there, line and staff organization will create a conflict. Like in a line, not status conscious, line is not status conscious. ठीक है। More sophisticated people are there, incapable of thinking in a line organization because they have a authority and all, but staff is a specialized person, they have a status conscious. They are sometimes they give unrealistic suggestions and easy and accessibility to the top management. So line staff will always have a clashes. Then interpersonal conflict is also there, which create a problem within a group. Clear. So all these are the reasons or various types of conflict, why conflict will arises. Now the process of conflict, how conflict arises. There are certain steps. First is the latent conflict, then you perceive the conflict, then you felt the conflict, then manifest the conflict, and final the outcome of the conflict, which is functional or dysfunctional. Now one by one. Latent conflict. Latent conflict at this stage, this is the very first stage, and at this stage conflict has not taken a shape, a stage where causes of conflict exist but it is hidden. आप जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो हैं कॉजेज, बट वो अभी हिडन है, दे आर नॉट नोन टू एनी वन. एंड लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन अ चेंज अकर, जब भी चेंजेस होंगे देन इट विल अकर.
The various sources of conflict are structural factor and a personal factors. Structural factor means the specification, means specialized people have a little awareness of other work, other task. So it create a problem. Interdependency, common resources are there. They have a goal differences, authority relationship या जुडिशनल एम्बिग्यूटी आपके अंदर है, मीन्स यू हैव अनक्लियर लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा काम क्या है ये आपको क्लियर नहीं है, ठीक है. तो दीज आर द स्ट्रक्चरल फैक्टर दैट कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट. देन अ पर्सनल फैक्टर लाइक योर स्किल एबिलिटी, योर पर्सनैलिटीज, your perception, your value and ethics, emotions, your communication barrier, cultural differences. All these are the various causes of conflict, various sources of conflict that may create a conflict if not handled properly. Then next stage is a perceived conflict. Means perceived conflict is a stage where awareness by one or more person of the existing condition, awareness by one or more person of the existence of the condition that create a conflict, party become aware of a source of conflict. मीन्स यहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, बट यहाँ पर एक या दो लोगों को पता चल गया है देखकर कि यस ये सिचुएशन बन रही है जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. दे कम टू नो अबाउट द सोर्सेज, दे आर अवेयर विद द सोर्सेज कि दीज आर द सोर्सेज विच कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आपने परसीव कर लिया. देन अ नेक्स्ट स्टेज इज फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट. फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स व्हेन पार्टी बिकम इमोशनली इन्वॉल्व्ड and begin to focus on difference of opinion, opposing interests, and it create anxiety, tension, frustration, hostility. मीन्स यहाँ पर क्या है, आप उस कॉन्फ्लिक्ट को फील करने लगे हैं, ठीक है ना, इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लग गई है, हॉस्टिलिटी क्रिएट होने लगी है. ठीक है, मीन्स अभी तक आपने दिखाया नहीं है बट आपके बिहेवियर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो रही है. ठीक है, यू फील दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. देन मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट मीन्स पार्टी इंगेज इन अ एक्शन दैट हेल्प अचीव ओन ऑब्जेक्टिव, हिंडर दोज ऑफ अदर्स. मीन्स यहाँ पर क्या है, आपका जो एग्रेशन, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब दिख रहा है, आपका एक्शन में आ गया. वो फेल्ट थर्ड स्टेज में क्या था, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक आपके अंदर था, अब वो आपके एक्शन में आ गया है. आप ओपनली एग्रेशन दिखा रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा. ठीक है, मीन्स यहाँ अब सबको पता चल गया ओपनली दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. एंड लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट आउटकम. जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इसका आउटकम आएगा, मे बी इट्स फंक्शनल और मे बी इट्स डिसफंक्शनल. इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि कैसे आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया है, उस पर डिपेंड करता है कि ये फंक्शनल है, पॉजिटिव है, या डिसफंक्शनल या नेगेटिव आपके लिए है. क्लियर? तो प्रोसेस क्या है, आप पहले जो है सोर्सेज देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज क्या हैं. देन यू परसीव कि हाँ उन सोर्सेज में से कौन सा ऐसा सोर्स है दैट ट्रिगर द कॉन्फ्लिक्ट. देन उसकी वजह से क्या हुआ, आपने फील किया अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगी. नाउ यू हैव शो योर कॉन्फ्लिक्ट, आपके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका सॉल्व हुआ, और इट डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म कि किस तरीके से आपने उसे सॉल्व किया है, कि ये आपका फंक्शनल बन रहा है या फिर डिसफंक्शनल बन रहा है. क्लियर? नाउ इशू इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट. इश्यूज आपके कोई भी हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, योर फैक्ट्स, your goal, method, values, organization structures. There are various sources or various issues of the conflict. Clear? Thank you for the day, students. Tomorrow we will discuss about the conflict management. How to, because being an organization behavior student, you know what cause a conflict and how to manage that conflict. If you manage that conflict very wisely, you can make a conflict functional in your organization. Okay? Thank you for the day, students.